What a final we are going to witness between UP and Chhattisgarh. Roll ball, which is growing in popularity by the day. And to know more about just before the final, we are joined by none other than Mr. Chetan, who is the General Secretary of the Roll Ball Federation of India. And he has been a player himself. We'd like to know more about the game from him. Chetan, talk us about the evolution of this game. It all started in Pune. Raju Dabolkar, yourself, you've been there right from the start. Yes, basically in 2002 we started this game in Bal Shikshan, and Mr. Raju Dabad, he is my coach and he started this game and he is the inventor of this game. Basically in 2002 when we started this game, everything was new for us, also for our parents, okay, because we were the speed skaters. So he introduced this game, and during these 19-20 years the roll ball has reached to such a height that now maximum participation is there. 24 states are participating. Earlier in 2002-2010 only 16 states were participating. Now we have 24 boys teams, means 24 states, 24 boys teams and 17 girls team, and this is a huge number, and this is the first time after COVID such a participation in such a big way, and I think this is the success that shows the success of roll ball. Well, Chetan, also talking about the sport, you know, you yourself have been a player, you've been part of 3 World Cups, and I think overall 5 World Cups have been held, men have succeeded in 4. So this sport has really grown very fast. Yes, basically, if you see the game is such a attractive that if you start seeing this game, you will not get up from your place until the game is over. So I think this is the success, and now currently we have 55 countries all over the world who is participating. In the last World Championship in 2019, I was the coach for Indian team. That time, 55 countries participated for the World Championship in Chennai. And day by day the countries are increasing, and I hope in the 6th World Cup we will at least cross 60 countries, and that is our target. Well, Chetan, like any sport which is growing, which is evolving, you would also want your sport, roll ball, to be on an Olympic sport in years to come. What are the steps being taken in that direction? Currently, we, as an administration part, we are already contacting the Olympic Committee, also the Commonwealth Committee for including this game in the Olympics. Basically, this game has gained popularity in India and also in 55 countries. Now, our last means one work that we have to do is to take this game into the Olympics, and that will be beneficial for the players, coaches, everyone. And this is an India-born game. So this will be the first, I think this will be the second game that will be participating in Olympics that is been born in India. Because first is the badminton that was born in Pune and India only. Well, Chetan, before we let you go, one final question. This national has been organized very well. Your thoughts on this particular national? Basically, after 2 years, we have organized this national, and it's good to see everyone participating in such a huge number. As I told, 24 states have participated. So we had a good management team, our Pune team and our Maharashtra team, who have worked really hard from last 1 month for organizing this competition. They have worked day and night organizing everything, booking the stadium, for managing their food and everything. So I think everything is going on well, and it will end in good only. Well, that's the man behind the scenes as far as the final is concerned. And sit back and enjoy what promises to be an exciting girls' final between UP and Chhattisgarh. Welcome to the women's final. The introductions, you have Chirag Patil, well-known cine star, son of great cricketer Sandeep Patil. He is introduced to both the teams. In fact, he played the role of Sandeep in that famous movie of '83. The teams there, Uttar Pradesh, Anjali, in fact it is Sunita Gupta who is the captain, Anjali, Ishika Gupta, Sunita Gupta, Kashika Yadav, Ayushi, Mishra, Ritika Chaudhary, Krishnakshi, Prachi Pachori in the goal, Janvi, Vedanti, Anjali Gupta, Zainab Fatima, Priyanshi, K. Sharwani, the coach Manish Srivastav, and the manager Ravindra Kapil. Once again alongside me is Babita. Pundir, Babita, you'd like to go through the Chhattisgarh side.
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद टीम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और जैसा कि इस समय वुमेंस का फाइनल मैच जो है शुरू होने वाला है थोड़ी देर में, और इसमें जो है छत्तीसगढ़ की टीम में जो है मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। मधु स्मिता बेहरा, श्रुति मैसी, नम्रता ठाकुर, प्रमदीप कौर, ईशा साहू, सत्य द्विवेदी, तृप्ति साहू, अंजलि नायर जो कि इस छत्तीसगढ़ की टीम की कप्तान हैं, और साथ ही साथ कल्पना मेहता, इसी के साथ अनिशा नायर, सुभद्रा पटनायक जो कि छत्तीसगढ़ की टीम की गोलकीपर के तौर पे जो है इस समय जो है अपने टीम में शामिल हैं, और आरती निषाद, साथ ही साथ टीम की कोच अर्चना कौर जी और मैनेजर सरिता जी। तो आप दोनों टीमों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, और दोनों टीमें जो है अच्छा खेल का प्रदर्शन करें। आज के इस 18th नेशनल रोल बॉल सीनियर वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। Well, Chhattisgarh having won the toss and they've elected to bowl here in this women's final. And it is Uttar Pradesh versus Chhattisgarh. And that is Chhattisgarh on the attack there. And Uttar Pradesh being led by Sunita Gupta. Sunita Gupta, number 11. Here you see the Chhattisgarh team. Number 10, which is of course Anisha Nair. And really they have a very strong. Namrata Thakur is there, number 3. Once again it is Uttar Pradesh attacking there. And Uttar Pradesh getting the first goal in as well. And they're all very happy. Why not? They would be having got a goal there. I think it was number 6 who scored there. Number 6 scoring for Uttar Pradesh, Priyanshi Kesharwani. 1-0. Anisha number 10. Namrata number 3 there. To the skipper Anjali. Anjali Nair. Uttar Pradesh once again get ball possession here as they attack from the left flank. Oh, and once again good goalkeeping there by the Uttar Pradesh goalkeeper Prachi Pachori. Here's an opportunity for Chhattisgarh, but poor finishing over there, Babita. Otherwise it would have been a good opportunity for Chhattisgarh to draw level. बिल्कुल किशोर जी, मैच के शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश की पारी में एक जो है रन बना है उन्होंने, और इस समय छत्तीसगढ़ जो है वो शून्य पे है। तो टीम की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश ने एक गोल के साथ की है, और छत्तीसगढ़ अपनी तरफ से पूरी तरीके से जो है अपने स्कोर हासिल करने में लगा है। इस खेल में मैंने जो देखा, जो ख़ास तौर पे गोलकीपर्स हैं उनका बहुत ही बड़ा जो है रोल है, और उत्तर प्रदेश की गोलकीपर जो है वो है प्राची पचौरी, और छत्तीसगढ़ की गोलकीपर है सुभद्रा पटनायक। तो दोनों ही टीम जो है बड़े फुर्ती के साथ जो है अपना जो है स्कोर हासिल करने में लगी हुई है। और ये 18th एडिशन है सीनियर रोल बॉल चैम्पियनशिप का, जो कि इस समय पुणे में महाराष्ट्र में हो रहा है, और अपने आप में ये बहुत ही खूबसूरत मौका है, जो कि बहुत सारे टीमों को यहाँ पे मेरे ख्याल से पहले जो नाकामयाबी हासिल हुई है, इस बार जो है उनको और भी अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिला है। किशोर जी, Yes, that is very true. As we see once again Uttar Pradesh building up an attack and doing very well there, but almost spotted there by the Chhattisgarh defense, being brought down there. Number 2 from Uttar Pradesh was doing very well over there, Ishika Gupta, but this time the target shooting wasn't what was expected, and it is once again Anjali there for Uttar Pradesh. Timeout being taken by the Uttar Pradesh coach Manish Srivastava. यहाँ पर 18th नेशनल चैम्पियनशिप का जो है आज फाइनल हो रहा है, और आइए बातचीत करते हैं अंकिता के साथ।
इससे पहले भी आप लोगों ने कहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया है? हम लोगों ने इससे पहला नेशनल झारखंड में खेला था और उससे पहले वाला सूरत में खेला था और अभी का अभी पुणे में खेल रहे हैं। कब से आप जो इससे जुड़े हुए हो? आज मुझे खेलते हुए 10 साल हो गए हैं ये गेम को और जब ये इन्वेंट हुआ था तभी हमारी स्टेट में उसी टाइम पे आ गया था। मैंने 2009 में ज्वाइन किया था और अब खेलते खेलते बहुत टाइम हो गया है। सो एज यू सेड इट इज़ नॉट अ गेम, इट्स एन इमोशन। सो हम उसी वजह से इसके साथ कनेक्टेड हैं। पूरे गेम को लेकर के क्या कहना चाहोगे आप ओवरऑल? कहने को ये गेम सेकेंड फास्टेस्ट गेम है ऑन व्हील्स। सो सबसे एडवेंचरस गेम है प्लस बहुत अनप्रिडिक्टेबल गेम है। सो इसकी वजह से इसमें बहुत ही लोगों को देखने के लिए भी मज़ा आता है और प्लेयर्स को खेलने के लिए भी मज़ा आता है। विश ऑल द बेस्ट। पूरी टीम को हमारी तरफ से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। The men's final having already been won by Rajasthan, who put it across a strong Maharashtra team. It is Chhattisgarh, the skipper Anjali Nair and number 5 Isha Sahu, and trying to have a go at the goal there was number 8 Anjali Nair, the skipper, but it's been Uttar Pradesh who's holding that slender lead of a goal, and Namrata giving it to Anisha back to Anjali Nair, the skipper. Anjali dribbling, trying to find and wanting to score over there, but could not quite breach the defense of Uttar Pradesh. Uttar Pradesh in the lead, 1-0 here. The two referees were officiating, Jayaprakash Singh of Maharashtra, Ravi Desai also of Maharashtra. Match referees Pratap Pagar, so also from Maharashtra. So all the officials from the state of Maharashtra, but at the moment somehow managing to save that one was the Chhattisgarh goalkeeper Shubhadra Patnaik. But Uttar Pradesh once again building up an attack here, but not quite able to apply the finishing touches, Babita. बिल्कुल। किशोर जी, जैसा आप अभी बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की टीम से जो अनिशा और अंजलि है, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और भारत के लिए इनका काफ़ी अच्छा योगदान है। रोल बॉल जो ये खेल है इस क्षेत्र में, और काफ़ी बहुत ही अच्छी और मेहनती खिलाड़ियों में से इनका जो है एक नाम आता है। अभी इस समय जो ये मैच चल रहा है छत्तीसगढ़ वर्सेस उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ने अभी एक रन की जो है रन हासिल किया है और छत्तीसगढ़ पूरी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से एक किसी तरीके से दोनों जो है एक गोल स्कोर करने के लिए। ईशा ने स्कोर किया जी। ईशा। तो इस समय उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक दोनों जो है बराबरी के पारी में आ चुकी हैं और छत्तीसगढ़ 1 उत्तर प्रदेश 1। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की टीम की तरफ से, और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच ये बहुत ही कड़ा एक मुकाबला हो गया है। और किशोर जी, जब बराबर के रन हो तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि दोनों ही बराबर हैं। अब देखना ये है कि इनमें से जीतेगा कौन। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। अंजलि, इशिका गुप्ता, सुनीता गुप्ता, कशिका यादव, आयुषी मिश्रा, ऋतिका चौधरी और कृष्णाक्षी, बहुत सारे इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश की टीम के, बहुत ही खूबसूरत उनका प्रदर्शन है। So after that timeout, the game once again resumes. Uttar Pradesh did take the early lead. Chhattisgarh did extremely well to come back, and they have drawn level here. Well, once again, it's really good to see the Chhattisgarh girls coordinating debut. The two sisters, in fact, Anjali and Anisha, they have been a real thorn in the flesh of Uttar Pradesh. Uttar Pradesh fighting back hard here. It's still 1-1 in this very hard-fought women's final of the 18th Senior National Rollerball Championship. And two officials, Jayaprakash Singh and Ravi Desai, both from Maharashtra. So also the match referee here, Pratap Pagar. Can either of these teams pull away and really register a victory here? Very difficult to say at the moment as to which of these two teams would be in the ascendancy. You've got Anjali Nair, who's leading Chhattisgarh. She's coordinating the attacks very well. You've got Isha, number 5, but good defense, I must say, from number 12 of Uttar Pradesh, Priyanshi.
And it is once again Uttar Pradesh that attack there, going a bigging. It is Anisha. Anisha to Isha. And that was a good try at the goal. Isha is not giving up. Number 6 for Uttar Pradesh. Fighting hard over there. And ball possession still in the hands of number 2 Ishika Gupta. The tall Ishika Gupta. There she is trying to breach the strong defense of Chhattisgarh. And once again Ishika. Can she score this time? A reverse try from her. But it's well warded off by the Chhattisgarh goalkeeper Subhadra Patnaik. And it is Anjali Nair. Anjali, all the Uttar Pradesh players falling back on defense. And it is Anjali Nair, the skipper of Chhattisgarh, who is leading the charge. She's brought down there. And losing ball position there. Uttar Pradesh will once again have an opportunity here. And really the Uttar Pradesh team got Krishankshi, number 10. Yeah, once again good coordination there by the Uttar Pradesh forwards. Ishika Gupta. But the Chhattisgarh defense equal to the task. And by the look of it, this may well go the distance. Well go down. Now just about the second sticking away here in this opening half of the first half rather of this women's final between Uttar Pradesh and Chhattisgarh. Two teams having done extremely well to reach the final. And it will all be down to which of these two teams are able to hold their nerve here. The game hasn't really risen to the pace which one is accustomed to see. At the moment, both the teams trying to assess each other, just trying to wear down the opponent. And that would mean that once again an opportunity here at the halfway stage. In fact, 1-1, 15 minutes, which would mean that about 10 more minutes remain. It's 1-1. छत्तीसगढ़ की टीम भी एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इस समय उनकी कोच अर्चना कौर जी जो है उन्हें कुछ अपनी तरफ से जो है कुछ मार्गदर्शन दे रही हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत ये मैच यहाँ पर चल रहा है और अभी इस समय आप देख रहे हैं महिला का फाइनल। Well, at the 18th edition of the National Rollerball Championship, pleasure to be joined by Anjali Nair, who is the captain of the Chhattisgarh team. Anjali, how long have you been playing this sport and how did you get attracted to this? It's been more than 10 years I'm in this sports, and I always loved skating because skating was not that popular in Chhattisgarh that time. I just saw my brother skating one day and I took his skates and started skating. But the speed and the thrill in this game excites me the most of this game. And in this particular nationals, your team is doing extremely well. What would you attribute that to? It's completely I give the complete credit to my Chhattisgarh association and my team because it's all about unity what we are doing today, and obviously all the players have contributed equally, so I'm really happy after my team's performance. And Anjali, tell us that how has the support been at home for this? This is a relatively new sport. You really don't, it's not like cricket, badminton or tennis which is known to everybody. So how did your parents, how was their reaction? No, my mother and father both are very, they both loved sports very much, and when we started this game, my mother was the manager of Chhattisgarh team, and when my father saw this game, he was also so connected with this game that he only took me and my sister daily to the practice, and even we were not that enthusiastic of this game, but my father was more always motivated of this game because he always supported us. Like I can't explain what he had done, but I never faced any problem due to my parents. They always supported me like very much.
Now, Anjali, looking at this sport as an outsider, as someone who is viewing it for the first time, looks a lot of agility, balance. As it is, skating isn't easy, and to play at such a fast pace, do you get a lot of inputs from your coaches to improve? Yes, obviously, our coach Archana ma'am, she actually, we didn't had the ground first, so we always went to the nationals and learned little things because there was no one to guide us properly. But our seniors, our boys team, Archana ma'am always supported us, and slowly we had progress. We were not that good earlier, but after day-to-day matches and all, we just improved one by one, and obviously due to the continuous practice, our game improved. And Anjali, finally, you've been someone, I'm sure you would be dreaming big, doing well at the international level. What is your long time dream in this game? No, actually, I had represented India 3 times, and I always wanted to be India the first place only because internationally this game is growing so much that it's very tough to maintain our place here. So I'm just aiming that we should grow daily so that we can compete with all the international teams properly and to make our country proud. Well, congratulations. Wish you all the best. Thank you for speaking to us. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. That was Anjali Nair, the captain of Chhattisgarh, sharing her thoughts, and we wish her all the best. The action resumes. It's still 1 goal apiece for Chhattisgarh and Uttar Pradesh. Anjali, the skipper, Anjali Nair, leading the charge, but unable to find the goal. Both the teams have had their shots at goal, but the accuracy has been missing from both the forwards of both the teams. You see Anisha Nair and the skipper Anjali there wanting to score, but once again off target there. So just under 10 minutes remain of the first half here of the women's final. The two sisters coordinating well, but the finishing has been an issue for both the teams. Both the teams haven't finished well, with the result that the goals have not been coming. Just the goal apiece in the first half. And it's number 2, Ishika Gupta. And the Chhattisgarh goalkeeper doing a good job, Subhadra Patnaik. And just a quick recap of the semi-finals. Chhattisgarh had beaten Rajasthan 4-2, whereas Uttar Pradesh got the better of Maharashtra 3-1. Chhattisgarh once again on the attack. Good save there by the Uttar Pradesh goalkeeper Prachi Pachauri. So even though the action has been happening, the attack from both sides, but debut timeout being taken here with the score line still reading 1 goal apiece. और आज जो है महिला जो है सीनियर वर्ग का फाइनल यहाँ पर हो रहा है, तो आइए हम बातचीत करते हैं विजय बघेल जी से, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से, और साथ ही साथ कबड्डी के पूर्व खिलाड़ी और इसी के साथ साथ रोल बॉल छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मैं कबड्डी का खिलाड़ी रहा हूँ और नेशनल खेल में भी मैंने मध्य प्रदेश की टीम से भाग लिया, गोल्ड मेडल भी लिए, सिल्वर मेडल भी लिए। यूनिवर्सिटी की टीमों से भी मैं ऑल इंडिया टूर्नामेंट में जाया करता था। तो शुरू से मैं बचपन से खेल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरा सौभाग्य कि आज मैं रोल बॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन छत्तीसगढ़ का भी प्रेसिडेंट हूँ। वहाँ के खिलाड़ी मुझसे आए, मेरे पास संपर्क किए और मैंने सहर्ष, चूँकि मेरे मन में खेल की भावना थी और आज देश को, प्रदेश को, ज़िले को, मेरे खुद के लोकसभा को अगर किसी और माध्यम से ख्याति प्राप्त मिलती है तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में देश का नाम, प्रदेश का नाम और क्षेत्र का नाम हो, ज़िले का नाम हो, उसके लिए हम सब जनप्रतिनिधियों को प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ हम विकास करें, सिर्फ हम शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दें, स्वास्थ्य में दें, वो तो आवश्यक है, लेकिन खेल के क्षेत्र में भी हमारा नाम हो
उसके लिए हम लोग लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है और मैं तो शुरू से इस खेल के प्रति जुड़ा हूँ और आज पुणे में आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं दूसरी बार पुणे आया हूँ, पहले भी एक टूर्नामेंट में आया था और रोल बॉल जो इसी धरती का ईजाद किया हुआ है हमारे राजू दबाड़े जी, उन्होंने इस मिट्टी पे खेलकर इस खेल का ईजाद किया और हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश का खेल आज लगभग 55 से अधिक देशों में खेला जा रहा है। 30 स्टेट में बच्चे बच्चियां खेल रहे हैं। वहाँ के पदाधिकारी इसको सजा रहे हैं, संवार रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक यहाँ पे छत्तीसगढ़ की टीम महिला और पुरुष दोनों ही टीमें यहाँ पर आई हुई हैं, तो खेलो इंडिया में किस तरीके से ये रोल बॉल शामिल हो सके, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे मैंने कहा 55 से अधिक देश हमारे देश के खेल को खेल रहे हैं और 5 वर्ल्ड कप हो गए हैं और उसमें 4 में हमारे बच्चे जीत कर आए हैं। हमारी बच्चियों का, लड़कियों का 3 बार वर्ल्ड कप हो चुका है, उसमें 2 बार हमारी बच्चियां जीत के आई है। तो स्वाभाविक है कि हम जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी हर खेल गांव स्तर के बच्चों तक पहुंचे और उसके लिए उन्होंने खेलो इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया और वो धरातल में भी देखा जा रहा है। मैंने खेलो इंडिया में हमारा रोल बॉल शामिल हो उसके लिए अभी पिछले महीने जब सत्र हुआ था तो माननीय अनुराग ठाकुर जी से भी मैंने मुलाकात की, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं स्पोर्ट्स के। हमारे MOS प्रमाणिक जी से भी मैंने बात की, जो MOS है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में। तो उन्होंने सहमति दी है कि हो सकता है इस बार हम जल्दी में, क्योंकि पहले से अगर प्रयास हो रहा था तो इस साल ही खेलो इंडिया में ये शामिल होता, लेकिन आने वाले समय में हम इसको ज़रूर शामिल करेंगे, ये आश्वासन दिए हैं। और इसके लिए मैं जिस स्तर पे हो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर मैं निवेदन करूंगा कि इस खेल को हम खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे बच्चों को लाभ मिले, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। Second half, after that timeout, it's still just that one goal for both the teams to show, which was scored in the first half. Can the last 12 minutes or so of the second half Anjali Nair, the skipper of Chhattisgarh, she has been coordinating the moves very well with Anisha, but unfortunately the finishing has let them down. Could this be another goal? But once again superb goalkeeping there by Prachi Pachori, the goalkeeper. And for Uttar Pradesh, once again it is Kashika Yadav. Number 1 is there Sunita Gupta, Ritika Chaudhary rather. And it's still a goal, 1 goal each. So the last 10 minutes or thereabouts, Debu, is going to be decisive. And these girls, they already have played 1 or 2 matches earlier today. So they already are tired, but still they are fighting their best, giving their best. And that was a great goal from Uttar Pradesh. So really wonderfully Anjali well done. Gupta. Anjali Gupta was the scorer for the Uttar Pradesh. Debu, they are going 2-1 up here. They have a decisive goal coming in the dying moments here. 2-1 for Uttar Pradesh in this women's final of the 18 Senior Roll Ball National Championships. And it will be up to Chhattisgarh now to attack and somehow win from this position. Things have not gone their way as far as finishing is concerned. And it's been really been Uttar Pradesh who the last time around Anjali who converted that goal. And in the com box once again time to thank Debu Banerjee, and once again welcome back in the com box Babita Pundir. Babita, welcome back. This final
now looks to be decided in the last 7 to 8 minutes over here. Uttar Pradesh getting that decisive lead and are leading to 1. बिल्कुल किशोर जी, एक बहुत ही अच्छा रोचक मैच चल रहा है इस समय महिला सीनियर वर्ग में, और उत्तर प्रदेश 2 पर और छत्तीसगढ़ 1 पर इस समय है। दोनों ही टीमें बहुत ही कांटे की टक्कर पे इस समय जो है ये खेल खेल रही हैं, बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ। और दोनों टीमों के जो है गोलकीपर्स को मैं देख रही थी, किशोर जी खास तौर पे दोनों ही टीम की जो गोलकीपर हैं वो बहुत ही अच्छे और स्पीड के साथ साथ जो है बहुत ही अलर्ट है। बहुत मुश्किल हो पा रहा है दोनों टीमों को जो है एक गोल बनाने के लिए। दोनों ही टीमों के जो गोलकीपर है वो एक से बढ़कर एक है। इस समय बहुत ही खूबसूरत ये मैच चल रहा है इस समय, और जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश इस समय लीड कर रहा है स्कोर के हिसाब से, और उत्तर प्रदेश 2 छत्तीसगढ़ 1 पे है। ऐसे में मैच 1 के फासले पे है, लेकिन दोनों ही टीमें बहुत मेहनत कर रही है। और ये खास तौर पे जिसने 5 नंबर जो है जिसने अभी स्कोर करने की कोशिश की, ये बहुत ही फुर्तीले एक प्लेयर इनमें से सब में से देखने को मिली है। छोटी सी है लेकिन बेहिसाब फुर्तीली कह सकती हूँ मैं, नंबर 5, जो कि बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन है। और ईशा साहू जी किशोर जी। Yes, Isha Sahu, she's been a live wire, short statured but really tall as her deeds go. And Uttar Pradesh still holding on there. Can Chhattisgarh fight back here? A goal down there. Ball possession still with Uttar Pradesh. As the minutes, just under 3 minutes now remain. Can Chhattisgarh somehow claw their way back? But Uttar Pradesh still having ball possession. And there you can see Jaiprakash Singh pointing out that it is now, the ball has to be given to Chhattisgarh. There was a foul committed there. And, whoa! That is a lucky break. That is indeed a lucky break for Chhattisgarh. A slight lapse on the part of the Uttar Pradesh goalkeeper Prachi Pachori. I mean that Chhattisgarh has drawn level. This could be now anybody's game. Just over 2 minutes. 2 minutes, under 2 minutes now. The game hotting up here. And we have Ravi Desai just about cautioning the players. The referees have to be very swift. They have to be on the ball. And Uttar Pradesh now really attacking on the attack. And you can once again see from Uttar Pradesh, you have number 10, Krishnakshi. Krishnakshi trying to dribble her way through all by herself. But Chhattisgarh once again an opportunity here. Namrata, number 3, having a go. Oh, that was a golden opportunity there, but could not quite convert it over there. That was Isha Sahu. Isha Sahu has been trying her level best here. Once again Uttar Pradesh, can they take the lead here, win this one? Oh, look at that, number 2. Superb goalkeeping, I must say, by Subhadra Patnaik. Action hotting up here. Anisha Nair. There she is, leading the charge for Chhattisgarh. Can she score? Oh, it's once again good goalkeeping there by Prachi Pachori. So as the second stick away, it's now down to the last 30 seconds. Less than that here. Once again Uttar Pradesh. Good goalkeeping. Chhattisgarh, Subhadra Patnaik. Can Anisha Nair score in the dying moments? The seconds are ticking away. It's just down to 10 seconds now. Just over 10 seconds, under 10 seconds. And can either of these teams score here a decisive goal here, or we will have to go into the extra time? At the moment, it is logged 2-2 here.
at the end of the regulation time. After 2 hours, both the teams fighting hard, locked at 2-all here. बिल्कुल 2-2 पे जो है दोनों टीमें किशोर जी इस समय सिमट गई है और उत्तर प्रदेश 2 पे छत्तीसगढ़ 2 पे दोनों ही टीमें जो है बराबर के आंकड़े में आ चुकी है और एक छोटी सी लापरवाही जो है गोलकीपर की जो है छत्तीसगढ़ के पाले में चली गई। ऐसे में दोनों टीमों का जो है इस समय जो अब दोबारा से जो है इस पारी के बाद मैच होगा वो डिसाइड करेगा कि आज का जो है विनर कौन होगा और इस समय हम सभी एक इंतज़ार में हैं। तो एक ब्रेक के बाद फिर से हम लोग जो है इनके साथ जुड़ने वाले हैं। At the Rollball Nationals, it is indeed a pleasure to speak to someone who has contributed so much to not only Rollball but sports in general. Speaking about Mr. I.P. Nagi, who is the former Director NIS Patiala, Sports Authority of India. Sir, pleasure to be joined. And when someone like you comes and watches, this is a relatively new sport. बहुत नया गेम है, बहुत इंडिजिनस है. आपका क्या थॉट्स है? गेम राजू जी की वजह से हम इस गेम में आए हैं और गेम देखने में बहुत अच्छा है, एक्साइटेड है, थ्रिलिंग है, फास्ट है मूवमेंट्स इसकी और अटैक डिफेंस बहुत कम समय में हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में बहुत प्रचलित होगा ये. For someone like Mr. Nagi, who would have seen a cross section of sports and sports persons, seeing a new sport, how do you see the future of this sport, sir? I'm sure they are also, first step is of getting the National Olympic Committee's approval and then maybe world body and then maybe becoming an Olympic sport. How do you see the sport growing? Yeah, so far as the popularity of this game is concerned in the initial stages, I'm definitely sure because this very exciting and thrilling game, it will definitely will be popular in the coming times in India and as well in the world. The very fact, sir, अभी तक 5 World Cup हो चुके हैं. For a game maybe just about 20 years, 2 decades old, it's a big achievement. Definitely, because when a new game is started, it takes a long time for the for taking it to the popular to the general public, and the way they are handling the issue, National Federation and International Federation, definitely in the coming times it will be more popular. And you've been associated with NIS Patiala, sir. Do you also have, children who are taking to this sport at Patiala? Yeah, with the federation, this Rollball Federation of India, we have started 6-week certificate course for the coaches of Rollball, and the second course is going on. So it is a very happy news for them that a lot of coaches are being trained by Sports Authority of India at Patiala. That's very encouraging to hear, and surely for Rollball, youngsters who are taking to this game, it would be a big thing because for any sport to prosper, you require good coaches, and that is what Patiala has always produced coaches of the highest order for every game. Yeah, because during the first course, there were all around 100 coaches which we trained, and this all coming up this ongoing course. There are about 40 coaches still they are under training at Patiala. And so now coming back to this nationals, you've been here, you've been seeing the semi-finals, the third place matches. What has been your impression? Yeah, this impression is very good. I'm watching the peoples are enjoying this game. Players are also playing with a lot of interest, and their parents, some parents are also there watching the games. Definitely the future of this game is bright. Well, thank you very much, sir, for sharing your thoughts. And I'm sure, with support for people like you, we've been in sports for so many years. The sport is headed for, for really higher honors. I wish the organizers all the best. Thank you. Thank you. So you heard it from Mr. Nagi, who is a former director of NIS Patiala. And I'm sure support from, people who are there to support the sports will go a long way in making the sport more popular. Extra time action, 10 minutes. Which of these two teams, Chhattisgarh or Uttar Pradesh, will come up trumps? We'll wait and watch. Chhattisgarh, once again you have Krishnakshi. One scores quickly. Uttar Pradesh have scored. So it is 3-2 now. Had that goal come in that regulation time, Uttar Pradesh should have won already, but no.
In the very first minute of the extra time, they scored. Chhattisgarh, can they equalize here? There is the captain, Anjali Nair. Anjali Nair and her sister Anisha, they've been the key forwards there for Chhattisgarh. But the finishing has been a problem. Anjali, the skipper, is not quite happy with herself. And Uttar Pradesh having scored in the very first minute of the extra time, now leading 3-2 in this women's final of the 18th edition of the Senior National Rollerball Championship. Krishnakshi, number 10. And coordinating well with Ishika Gupta. And Ishika Gupta now moving in. But she's been throttled by number 5, Isha Sahu of Chhattisgarh. Once again, action there. It is Krishnakshi. But Uttar Pradesh unable to score that. And it will be Isha once again. You were mentioning a while ago, Bhavita, as to how Isha is such. She looks very short-statured, but she is really swift and really moves in fast. Can Chhattisgarh score over here? Uttar Pradesh defense really very strong at the moment, not allowing the Chhattisgarh forwards to move in there. Babita. किशोर जी, अभी आपने देखा जैसे उत्तर प्रदेश ने जो है एक गोल फिर से जो है हासिल किया और 2-3 के उस पर जो है ये मैच चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ 2 और उत्तर प्रदेश 3 पे है. अभी जो है मैच बहुत ही कांटे की टक्कर का हो चुका है और छत्तीसगढ़ की टीम अपनी तरफ से बहुत अच्छा खेलने की कोशिश कर रही है. उत्तर प्रदेश की टीम भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है अपनी तरफ से. और ऐसे में टीम की कैप्टन के साथ साथ ख़ासतौर पे नंबर 10 जो है ये बहुत ही अच्छा जो है खेल रही हैं, अनिशा नायर, जो कि बहुत बढ़िया उनका एक प्रदर्शन है. अनिशा नायर जो है छत्तीसगढ़ की टीम से खेल रही हैं और नंबर 10 पे जो है कृष्णाक्षी बहुत अच्छा खेल रही हैं उत्तर प्रदेश की टीम से. ऐसे में कुछ प्लेयर्स इसमें जो है वो एकदम फुर्ती के साथ और एक चांस भी नहीं छोड़ना चाहते हैं. ख़ास तौर पे जो ये नंबर 5 है ईशा साहू छत्तीसगढ़ की टीम से, इसकी फुर्तीली जो एक स्पीड और एक्यूरेसी है वो एक खिलाड़ी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. और इस समय छत्तीसगढ़ के जो महिला टीम है वो थोड़ा सा एक उसमें दिख रही है और एक गोल के डिफरेंस से जो है टीम जीतती और हारती है किशोर जी. तो एक बहुत ही मैच ऐसे पड़ाव पे आ चुका है कि एक मैच एक पॉइंट से जो है कुछ भी रिजल्ट आ सकता है दोनों टीमों का. तो ये एक है. और इसी के साथ साथ नंबर 2 जो है जो उत्तर प्रदेश की टीम में है, नंबर 2 पे सूती ये जो है इशिका गुप्ता, वो भी एक अच्छी एक उभरती अगर हम कहें तो बहुत अच्छे खिलाड़ी के तौर पे जो है उनका इस खेल के दौरान जो है एक बढ़िया प्रदर्शन लग रहा है और काफ़ी फुर्ती के साथ जो उनका ये इस समय जो है मैच चल रहा है. दोनों ही टीम एक दूसरे के साथ इतने द्वंद्व में लगी है कि कैसे करके एक स्कोर जो है वो हासिल कर ले. किशोर जी. Yes, Ritika Chaudhary has been leading the charge. It's in the defense also. Look at that. Players really going hell for leather here. Really wanting, especially the Chhattisgarh forwards, want to score somehow, want to draw parity. At the moment, that 1 goal difference separating the two teams. Can Chhattisgarh be able to roll well? There you see once again number 5. She is a real live wire, Isha Sahu. And Isha Sahu. It is Anisha Nair. Anisha Nair giving it to Namrata, to Anjali Nair. Once again, the finishing. Look at this, Uttar Pradesh leading the charge there. It was Ishika Gupta. And so the pace hotting up here in this extra time of 10 minutes. And it's very much Uttar Pradesh in the lead, 2-1. And the Chhattisgarh goalkeeper doing a decent job there. Subhadra Patnaik.
both the goalkeepers, I must say, Babita have done a splendid job. Prachi Pachori for Uttar Pradesh and Subhadra Patnaik for goalkeeper for Chhattisgarh. बिल्कुल किशोर जी, इस समय जो है दोनों ही गोलकीपर अगर कहा जाए तो एक दूसरे से कम नहीं है और दोनों टीमें जो है इस होड़ में लगी हुई है कि किसी तरीके से जो है मैच जो है उनके फेवर में आ जाए। उत्तर प्रदेश की टीम जो है इस समय थोड़ा सा एक रिलैक्स उसमें लग रही है और काफ़ी आराम से जो है वो मैच खेल रही है। उत्तर प्रदेश 3 और छत्तीसगढ़ 2 के उस पर इस समय जो है मैच का स्कोर चल रहा है और इस समय आप देख रहे हैं ये 18th सीनियर नेशनल रोल बॉल चैम्पियनशिप फाइनल मैच इस समय महिलाओं का चल रहा है और एक तरफ उत्तर प्रदेश के गोल कीपर प्राची पचौरी, उनके ऊपर जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ सुभद्रा पटनायक, एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है उन्होंने गोल को जो है वो किया और दोनों ही टीमों में बहुत ज़बरदस्त की टक्कर नज़र आ रही है इस समय। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन के साथ नंबर 10 जो है छत्तीसगढ़ की टीम से नंबर 10 जो कि अनिशा नायर जो है इस समय बहुत ही आक्रामक तरीके से खेल रही हैं और इस समय जो है उत्तर प्रदेश की टीम जो है 1 रन के बढ़त से आगे है किशोर जी। तो ऐसे में जो है दोनों ही टीमें काफ़ी एग्रेसिव उसमें हैं। Yes, Krishnakshi here for Uttar Pradesh, number 10. There she is moving in all alone, but not quite the angle from where she could shoot the way she would have liked. But this is really going to go down to the wire. These two teams fighting tooth and nail. Uttar Pradesh in the lead. That solitary goal separating the two teams. Krishnakshi, she has been really been leading the attacks here, and here's an opportunity for them to in fact increase their lead at the moment. Very much in this, will they be able to score off the penalty and increase their lead? Chhattisgarh under pressure at the moment, as it is they are trailing by a goal. The coach having a word with the referee Ravi Desai, and the minutes ticking away. Look at that, already that lead there, and this is a golden opportunity. Oh, look at that, superb work in the goal, but once again, twice, what goalkeeping, one must say. This has been splendid goalkeeping by the Chhattisgarh goalkeeper Subhadra Patnaik. Full marks to her. She not only averted the penalty. Isha, can Isha score? Good move, but it is still Uttar Pradesh in the lead. Now it's just down to 3 minutes remain now. So the action really hotting up here. There you go. There is Anisha Nair. Will she be able to score? Oh, once again it is the Uttar Pradesh goalkeeper Prachi Pachori. So Babita, this the action really now hotting up here. Look at this. बिल्कुल 4 नंबर को जो हम देख रहे हैं इस समय झारखंड की टीम से परमदीप कौर, एक बहुत ही अपने आप में जो है चैलेंजिंग हो चुका है इस समय ये मैच और जितने खूबसूरती से जो है इस समय प्राची पचौरी ने जो है गोल को बचाया है और इससे पहले सुभद्रा पटनायक ने छत्तीसगढ़ का जो है बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन किया अपने गोल कीपिंग का और अभी फिर से जो है छत्तीसगढ़ अपने एक स्कोर के लिए जो है काफ़ी एफर्ट्स कर रहा है। उत्तर प्रदेश 3 और छत्तीसगढ़ 2 पे इस समय किशोर जी चल रहा है। दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छे तरीके से जो है अपना खेल का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की टीम किसी भी तरीके से अपना ये स्कोर जो है हासिल करना चाहती है और कुछ ही मिनट बचे हैं, 1 मिनट कुछ सेकंड बचे हैं मैच को समाप्त होने में, ओवर होने में और ऐसे में देखना है कि एक गोल जो है किसके फेवर में जाता है। And what a goal! That is the skipper leading the way. Anjali Nair scores for Chhattisgarh and it is 3 goals all. What a final we are witnessing, Babita. बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत जो है ये देखने को मिला। उत्तर प्रदेश 3 और छत्तीसगढ़ 3-3 पे और छत्तीसगढ़ ने जो ये बढ़त हासिल की है इससे जो है दोनों टीमों में जो है बराबरी की टक्कर फिर से शुरू हो गई है। नंबर 5 और नंबर 12 फ्रॉम उत्तर प्रदेश, नंबर 5 छत्तीसगढ़ बॉल को अपने
रोल करते हुए नंबर 12 उत्तर प्रदेश की टीम एक रन बढ़ाने की तरफ, और दोनों ही टीमें 3-3 पर जो है इस समय आ चुकी है। कुछ ही सेकंड बचे हैं मैच ओवर होने में, और ऐसे में किशोर दोनों ही टीमें एक ही उस पे हैं। मैच उत्तर प्रदेश बहुत ही खूबसूरत बढ़ोतरी के साथ, उत्तर प्रदेश 4 और छत्तीसगढ़ 3, कुछ ही सेकंड बचे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश 1 रन से जो आगे है। और ऐसा लगता है कि ये मैच जो है महिला का जो आज का जो फाइनल है वो उत्तर प्रदेश के ही हक में जाने वाला है किशोर जी। Yeah, it looks like that. It's a lying down moments, just under 2 seconds now. And it is Uttar Pradesh who had scored over there. And it is Uttar Pradesh who win by a slender margin of a goal. 4-3. What a victory it is for Uttar Pradesh girls. They put it across Chhattisgarh in a hard-fought women's final of the 18th edition of the Senior National Rollball Championship. What a victory for Uttar Pradesh. They prevail over Chhattisgarh by a solitary goal. 4-3, the final scoreline reading. Well, it's a pleasure to be joined by two of the winning members of the victorious team, Uttar Pradesh. The captain is just alongside me, Sunita Gupta. So also the goalkeeper, Prachi Pachori, who did a splendid job. सबसे पहले सुनीता, डाइंग मोमेंट्स तक ये बोलना बहुत मुश्किल था कि कौन सा टीम जीतेगा। हाफ टाइम तक और फुल टाइम तक इवन टाई हुआ हमारा स्कोर, और लास्ट 2 मिनट में स्कोर हुआ। एक्स्ट्रा टाइम में भी स्कोर हो गए, इक्वल हो गए। उसके बाद लास्ट में हमने लास्ट के 1 मिनट में स्कोर किया और पूरी टीम के एफर्ट से हमने मैच को जीता है। वो तो वेल सेड लाइक ए कैप्टन गिविंग द क्रेडिट टू द टीम। राजा, आपका गोल कीपिंग बहुत ही बढ़िया रहा। थैंक यू। कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो फिर प्रैक्टिस करी थी हमने बहुत, तो अल्टीमेटली वी विन। और जब रेगुलेशन टाइम में स्कोर इक्वल था, सुनीता क्या स्ट्रैटेजी था जब वो एक्स्ट्रा टाइम 10 मिनट का क्या स्ट्रैटेजी? सर एक्स्ट्रा टाइम में हमें टाइम आउट नहीं मिलता है, टीम टायर्ड थी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट लिया हमने। फर्स्ट 1 मिनट में पहला अटेम्प्ट था हमारा, 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम था। दैट टाइम वी विल डिसाइडेड कि अटेम्प्ट लेंगे, मैक्सिमम अटेम्प्ट लेंगे, क्योंकि हम डिफेंस खेलते हैं तो सामने वाली टीम अटैकिंग आ जाती है, इसलिए हमने अटैक खेला। और हमारी टीम ने पूरा सपोर्ट करते हुए, टीम कोच, टीम मेंबर्स एंड गोलकीपर प्राची, सब ने एक अच्छा एफर्ट करते हुए मैच को विन किया हमने। और जब बाद में भी छत्तीसगढ़ ने इक्वल किया तो ऐसा लग टाइम वी विल फील प्रेशर, बट रिलैक्स करके स्लो करके थोड़ा सा गेम को हमने आगे फास्ट किया कि हम आगे चल के कैसे स्कोर करेंगे। स्लो किया और टीम को लगा कि हम स्लो खेल रहे हैं, लेकिन दैट टाइम फिर हमने इकट्ठा उसको स्पीड अप करके और फिर गोल कन्वर्ट किया लास्ट के 1 मिनट में। इवन 30 सेकंड में, लास्ट के 30 सेकंड में हमने गोल कन्वर्ट किया है, और वो एक्साइटिंग मोमेंट था। प्राची, आपका कोच भी बहुत ही इन्वॉल्व था, वो भी उन्हें पता है कि हमारी वीकनेस कहाँ है, हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो फिर वो हमें गाइड कर रहे थे बाहर से, और शायद उन्हीं के गाइडेंस की वजह से शायद हम फाइनली जीत पाए यार। अच्छा, आप ये बताइए रोल बॉल कितना पॉपुलर है उत्तर प्रदेश में? प्राची, पॉपुलर है, अराउंड वी कैन से दैट 14 to 15 जो स्टेट्स हैं वो जानती है रोल बॉल को। और क्या कहते हैं, जैसे कि हम सब प्लेयर्स से ज्वाइन है, तो फिर हमारे स्कूल में भी खेला जाता है, तो फिर वी कैन से कि आगरा में बहुत अच्छा है। मैं आगरा की हूँ, तो फिर आगरा में बहुत पॉपुलर है हमारे गेम। उत्तर प्रदेश में रोल बॉल लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तर प्रदेश में, और लगभग 30 to 35 डिस्ट्रिक्ट्स में खेला जाता है। और उत्तर प्रदेश की टीम नेशनल्स में हर बार मेडलिस्ट रही है। इवन रिकॉर्ड रहा है हमारा कि हम गोल्ड मेडल ही लेके जाते आ रहे हैं हमेशा। इवन गुजरात हमारा गोल्ड मेडल रहा है, लास्ट सीनियर नेशनल, लास्ट सीनियर नेशनल, और इस टाइम भी हमारा गोल्ड है। सो एफर्ट है हमारे कोचेस का, हमारे ऑफिशियल्स का और हमारे प्लेयर्स का। और ये तो एक्स्ट्रा खुशी होगा कि जिस शहर में ये गेम ओरिजिनेट हुआ वहाँ आप गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। जी सर, ये बहुत अच्छा था। हमारा 3rd प्लेस मैच, हमारा सेमीफाइनल महाराष्ट्र से था, और उनको बीट करने के बाद सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि महाराष्ट्र को हमने सेमीफाइनल में बीट किया, और फाइनल हमारा छत्तीसगढ़ से था। क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए? एजिलिटी तो है ही, बट इतना आपने कोई इतने मुश्किल टाइम में 2-3 अटैक्स हुए, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा गोल कीपिंग किया। गोलकीपर की क्या कहते हैं, एक तो फोकस बहुत ज़रूरी होता है कि बॉल पे फुल टाइम फोकस रहना चाहिए। दूसरा क्या कहते हैं, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो फिर ये दो चीज़ हैं जो कि एक अच्छे गोलकीपर को क्या कहते हैं और बेहतरीन कर सकता है। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को।
So that is the skipper Sunita and the goalkeeper Prachi, who did a splendid job to ensure that Uttar Pradesh won this 18th edition in the women's section.